hence we can draw infinitely many tangents. At each and every point, one tangent can be drawn. So for the first one, we'll be writing, if a particular point is not mentioned over here, then infinitely many tangents can be drawn. Are you getting it? Yes or no? Afreen, Samya, are you getting it? How many tangents can a circle have? Is it making sense? Just a moment. Yeah. Are you getting it, Samya and Afreen? Yes, ma'am. There will be infinitely many tangent in a circle. Okay, a tangent to a circle intersect it in. A tangent intersect the circle at one and only one point. Okay, that's called the point of contact. So intersect it at or in one point, just one and only one point. Okay, a line intersecting a circle in 2 points is called, guess what will be there? Tell me, number two, what will be there? Yes, Afreen and Samia, what will be there in the second blank? Are you able to read it? No, ma'am. What will be there? Yes, a line intersecting the circle in 2 points is called? Yes. Ma'am, can you please repeat? Yeah, Afreen, what you say? Could you please repeat? The second one, a line intersecting a circle in 2 points is called a, Second. yeah, secant, right? Last day I was explaining that if we are having a line, okay, if it is not intersecting the line is called non-intersecting line. If it is intersecting the line at 2 points, it is called secant. If it is intersecting the line at one and only one point, that's called tangent. Okay, so secant. Next, a circle can have dash parallel tangent at most. How many parallel tangent we can draw at a time? At a time. Yes. How many parallel tangent can be drawn at a time? In a circle at a time, how many parallel tangent you can draw? Last day we were discussing that if we will draw a secant, to this secant at most two parallel tangent will be there, right? So even though the secant is not mentioned, at a time at most two parallel tangent can be drawn in a circle. Okay, tangents, but has to be parallel. So at most two at a time we can draw, yes or no? Yes, ma'am. Okay, at most two parallel tangent can be drawn at a time. Okay, that's what is written over here. Next one, the common point of a tangent to a circle and circle is called, Point of contact. yes.
Okay, and we are done with these fill in the blanks. For these type of question only, I had taken the last class to give the whole introduction from the basic. Now the third one we'll be doing, and the fourth one, then we will be discussing few theorems. So let's do a tangent PQ at a point P of a circle. So we are having a circle, okay, and at a point P, a tangent PQ. At a point P, we are having the tangent, and the tangent is tangent PQ. Making sense? A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. This circle's radius is 5 centimeter. Okay, meets a line through the center. Okay, a tangent PQ at a point P of a circle. Now it's giving the detailing about the circle, that the circle is having the radius 5 centimeter, but meets is used for the tangent. Okay, meets a line, that means tangent meets a line. Meets a line, this meets a line, that means tangent meets a line through the center. Okay, tangent meets a line through the center O. Tangent meets the line, okay, through the center O at a point Q. That means O and Q is meeting with each other. Are you getting it? So that OQ is 12. Length PQ we have to find. We have to find the length PQ. Okay, the length PQ. Read the question. If you will not draw the figure properly, then you won't be able to find it. Okay, a tangent PQ at a point P. So tangent it is at point P. Okay, and we are having the tangent PQ. That means it starts from P and going till Q. हमारा जो tangent है वो P से start होके Q तक जा रहा है. यही लिखा है क्वेश्चन में. सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट P है जहां से हमें tangent ड्रॉ करना है, और ये जो tangent है पॉइंट P से स्टार्ट होके Q तक कंटिन्यू हो रहा है. ओके, नाउ थोड़ी बहुत डिटेलिंग सर्कल के बारे में हमें दी गई है, दैट द सर्कल इज हैविंग द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड ऑल. ओके, नाउ tan meets a line through the center O. Meets a line through the center O. अभी ये जो स्टेटमेंट है हमें दिया गया है, that tangent meets a line through the center O. Okay, read it carefully. Tangent meets a line through the center O. Still we are not clear how to attach the tangent and the center O. How to connect the tangent and the center O, अभी हमें clarity नहीं मिल रहा है. Okay, at a point Q. अब हमें clarity मिल रहा है कि O and Q को connect करना है. Okay, यहाँ हमें दिया भी हुआ है that OQ is 12. Okay, this is the figure. The moment we are done with drawing the figure, last day we have discussed a theorem that the radius, okay, if we are having tangent at any point in a circle, okay, and the radius which is passing through the point of contact, radius which passes through the point of contact is perpendicular to the tangent. Okay, this theorem we have discussed in the last class. See this theorem. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये जो रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है, वो रेडियस टैंजेंट के साथ 90 डिग्री क्रिएट करता है हमेशा. ओके, so we will be using this theorem over here in our question. We'll be saying that we know that in triangle OPQ we already know that angle P is 90 degree. So this is not a random triangle, this is a right angle triangle. Are you getting it? Getting it? Yes, ma'am. Afreen and Samia? Yes, ma'am. No? Okay, so here 90 degree we are having. We have to find the length of PQ. How to find the length of PQ? Please tell me. It can be found out by under root OQ square minus OP square. Yeah, Pythagoras theorem, under root
OQ is square minus OP is square. Already we know OQ is 12. And what about OP? It is 5. Yeah, the radius of the circle. Okay, so yeah, we'll be able to do it. Now the next question, I think it is practical. Draw a circle and two line parallel to a given line such that one is tangent and the other one is secant to the circle. So this is construction based. Okay, draw a circle. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other a secant to the circle. So we are having a line. Okay, draw a circle and two line parallel to a given line. Suppose this is a given line. Okay, it's just construction that one of the line is a tangent. This type of question you will not get in your exam. Okay, another is secant. So this is this type of construction we have to do, which is just trying to identify that are you clear with the terminology, tangent, secant and all. Okay, let's do few more questions. Yeah, can you see this screen? These are the theorem which you have done in class 9. Last day I was telling you that these theorems proof is not required over here. Okay, but you need to know the theorem because here and there while solving the question we will use these theorems over here. Okay, so the first theorem, just a second. Yeah, you can see this screen, right? Yes, ma'am. Okay, so the first theorem, just a second. Yeah, the first theorem, the perpendicular from the center of a circle to the chord bisect the chord. If in a circle, I'm just trying to remind you those theorem which you have already done. So if in a circle, okay, you are drawing a chord, okay, this is a chord in a circle, or maybe this is a chord in a circle, okay. So the perpendicular from the center on this chord, if you will drop a perpendicular, if you will drop a perpendicular from the center, okay, here it's not related to radius and all. This theorem you have done in class 9. If we are dropping a perpendicular from the center on the chord, okay, perpendicular, then our chord is getting bisected in two parts. Okay, bisected, I mean the word terminology bisected is enough to understand that it is getting divided in two equal part. If the name of the chord was AB and here was M, that means AM is equals to BM, right? Yes, ma'am. Okay, if the name of the chord is PQ and here is S, that means PS is equals to SQ. And we had proved this theorem in class 9 by taking that this right, the triangle, one of the triangle over here, one of the triangle over there, and then proving them congruent, and due to that it will come, okay, PS SQ same, or maybe AB MB AM MB same. Okay, so just keep it in your mind the theorem that when we drop a perpendicular on a chord from the center, our chord will get bisected. And the converse of this theorem is also true. Converse is also true that in case we are having a circle and in case we are having a chord which is getting bisected by a line, okay, our chord already we can see that our chord is bisected, okay, by a line, and that line is not a random line, it is coming from the center. Okay, if by this particular OM our chord is getting bisected, that means OM must be perpendicular to PQ. Getting it? Yes, ma'am. Okay, the next one, equal chord of a circle are equidistant from the center. Again, one of the theorem from class 9. Quick, I am just explaining you the uses and the meaning of these theorems. Just a moment, let me take the next one. So if we are having a circle and in that circle if we are having equal chords,
two chords we are having and both are equal in length. In a circle, chords we are having, one of the chord, another chord, okay, and both are equal in length. Here the chord AB, if that is 5 centimeter, chord PQ, that too is 5 centimeter. Okay, equal chord are equidistant from the center. These two chords must be at same distance from the center O. Now again I am reminding you, when we are talking about distance of a point from a line, it has to be perpendicular distance. We cannot think about the random distance. Okay, so center का distance हमें अगर AB से बताना है, AB is a straight line and O is the center, and if we want to talk about the distance of the center from AB, we are talking about the perpendicular distance. Okay, so the perpendicular distance of O from AB, this distance, okay, if this is 6 centimeter, then the perpendicular distance from O to PQ, that will also be 6 centimeter. Getting it? Yes, ma'am. Okay, that's what the theorem says. Equal chord of a circle are at equal distance from the center. And if you are having, the converse is also true for this particular theorem as well. If you are having a random circle, just like this, and in that circle you are having just two random chords. Okay, one of the chord over here, another chord over here, just random chord. Okay, and these two chords are located at same distance. You are noticing you don't have any information about the chord, but you know the perpendicular distance, this is 5, and you know from center the other one is also 5. Then you can say that these two are not random chord, these two chord will be of same length. Getting it? Yes, Next, equal chord of a circle subtend equal angle at the center. Okay, equal chord subtend equal angle at the center. Two chords which are equal in length. Again, if we are having a chord AB and if we are having a chord PQ, and if these two are equal in length, okay, don't analyze just due to the figure and all. This time telling you that assume that AB and PQ are of equal length. Okay, equal chord of a circle subtend equal angle at the center. So this two must be making same angle at the center. अब हमारे माइंड में ये ऑलरेडी क्लास 9 में क्लियर था कि कॉर्ड कैसे सेंटर पे एंगल क्रिएट करता है. ओके, कॉर्ड कैसे एंगल क्रिएट करता है सेंटर पे, मतलब वन ऑफ द एंड, कॉर्ड का एक एंड हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं और दूसरे एंड को भी हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, और इसे कहते हैं कॉर्ड सेंटर पे एंगल क्रिएट कर रहा है. आया ना? Getting it? The chord AB is making angle at the center, chord PQ is making angle at the center. Can you see? If AB and PQ are of equal length, then this two angle will also be same. If AB and PQ are equal in length, then this two angle will also be same. The angles, okay, which is getting created by these equal chord must be same at the center. Is it clear so far? Is it clear so far, Afreen and Samya? ma'am. Next one, angle subtended by an arc of a circle.
This one, angle subtended by arc of a circle. Now again the same question, how arc create angle? So suppose this is an arc, and this arc is creating angle at the center. Okay, just like this. This arc, okay, here we can see the arc AB is creating angle at the center, arc AB. Angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle created, angle subtended by it at any point on the remaining circle. Same arc will create another angle on the remaining part of the circle. Same arc is creating another angle on the remaining part of the circle. Remaining part means just excluding the arc AB. ओके हमारे पास एक आर्क है जो सेंटर पे एक एंगल क्रिएट कर रहा है. ओके एंगल इज एंगल एओबी. सेम आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट का क्या मतलब है, आर्क ए बी को छोड़कर. ओके दिस इज द माइनर आर्क ए बी and there is another arc as well. You can clearly see that we have a major arc, this one, the blue one. Okay, so on the remaining part of the circle, this blue one is called as a remaining part of a circle. Remaining means excluding the arc AB. On this remaining part, whatever angle is getting created, that will be 2 times of AOB. Yes or no? No. Yes or no? Center one will be double, not that one. That one is X, then the center one will be double. Getting it? Afreen and Samia, are you getting it? Yes. किसी सर्कल में अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर आर्क है जो सेंटर पे एंगल क्रिएट कर रहा है, और सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे भी एक एंगल क्रिएट कर रहा है, तो इन दोनों एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है. जो रिमेनिंग पार्ट में एंगल क्रिएट हो रहा है, सेंटर वाला एंगल उसका डबल होगा. ओके, नाउ द लास्ट वन, angle in the same segment of the circle are same. Okay, if we are having angle in the same segment, then both the angle will be exactly same. This one, angle in same segment of the circle are equal. If we are having a circle, okay, and if I am drawing a particular arc like this, then you can see two arcs we are having, a minor arc and a major arc. And if we will talk about the segment of a circle, अगर हमने इस आर्क को ऐसे कॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ज्वाइन करके, तो इसे हम सेगमेंट बुलाते हैं. डू यू नो आफरीन एंड सामिया, दिस इज अ सेगमेंट एंड Yes. दिस इज अनदर सेगमेंट. यस और नो? Yes, ma'am. आर्क एंड कॉर्ड मिलके सेगमेंट बनाते हैं. ओके, so that's what the theorem says, angle in the same segment of circle are equal. ओके अगर हमारे एंगल्स एक ही सेगमेंट में क्रिएट हो रहे हैं तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं आपस में. दिस वन एंड दिस वन, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल विद ईच अदर. सेम सेम कॉर्ड दोनों एंगल बना रहे हैं. ओके, और सेम सेगमेंट में दोनों एंगल है, तो दोनों एंगल आपस में सेम होंगे. एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? No, ma'am. And the last one, the angle in a semicircle is right angle. ओके, सेमी सर्कल में जो हमारा एंगल क्रिएट होता है वो 90 डिग्री का होता है. कैसे? दिस इज हाउ विल बी हैविंग. If we are having a circle and if there is a diameter like this, okay, so you can see the upper part is a semicircle, the downward part is again a semicircle. So angle in a semicircle, अगर
ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर हमें एंगल क्रिएट करके दे रहा है, देन इट विल बी 90 डिग्री। अगेन द सेम लॉजिक, ओके, सेंटर वाला एंगल and this angle is having a relation, the center one will be the double of that one. So यहाँ हमें पता है ये जो सेंटर वाला एंगल है ये 180 का है, तो ऑफ कोर्स ये 90 ही होगा, हाँ या ना, राइट? राइट। अभी अभी हमने एक थ्योरम देखा जहां पे ये बोला जा रहा था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में एक आर्क है, तो ये जो आर्क सेंटर पे एंगल क्रिएट करेगा और सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल क्रिएट करता है, दोनों में एक रिलेशन होता है। ओके, द सेंटर वन इज द डबल ऑफ द रिमेनिंग वन। तो यहां भी हम उस थ्योरम को थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं कि हमारे पास एक आर्क है ए बी, और ये जो आर्क है एक एंगल क्रिएट कर रहा है सेंटर के ऊपर, ऐसा कुछ। और सेम आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे भी एक एंगल क्रिएट कर रहा है। इन दोनों एंगल में रिलेशन होता है, सेंटर वाला एंगल डबल होता है ऑफ दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, ओके, दिस रिमेनिंग एंगल। तो अगर हमें पता है सर सेंटर वाला एंगल 180 है, तो ये जो एंगल, लेट मी से पी, ये जो एंगल ए पी बी है ये ऑफ कोर्स 90 ही होगा। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. ओके, इफ यू आर क्लियर टिल हियर, अब तक मैंने सिर्फ क्लास 9 वाले थ्योरम लिए हैं और क्विक 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 मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इफ टिल हियर you don't have any doubt, then I am giving you few questions, please do it. Just a moment. Please do it.
Yeah. Please find the required angle BAD and BCD. Yes, which option is the correct option? Afrin and Samia. We have to find angle BAD. Okay, can we see that there is an arc? ये जो आर्क है सेंटर Ma'am, पे भी एंगल क्रिएट कर रहा है. यस. ma'am, I'm getting angle BAD as 65 and angle BCD as 115. 105. That means option A, right? Option D. Okay, D. Okay, let's check it. तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक आर्क है हमारे पास BCD, और ये जो आर्क है सेंटर पे एंगल 130 क्रिएट कर रहा है, और सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे भी एक एंगल क्रिएट कर रहा है. अभी अभी हमने जो थ्योरम देखा उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं दैट इफ दिस वन इज 130 देन यहाँ जो एंगल क्रिएट होगा ये हाफ होगा 130 का. ओके, दैट मीन्स 2 6 टाइम्स 12, 2 5 टाइम्स 10. तो हमें एंगल बी ए डी तो पता लग चुका है 65 डिग्री. ओके, मे बी ए मे बी डी, दो ऑप्शंस हमें दिख भी रहे हैं. अब हमें ये भी पता लगाना है व्हाट इज बी सी डी. हाउ टू फाइंड बी सी डी आफरीन? Ma'am, we can do angle BAD plus angle BCD is equal to 180 degree. एज दे आर, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं. कौन सा क्वाड्रिलेटरल? दिस वन. ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक बुला रहे होते थे जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल लाइन CDAB. इट्स साइक्लिक. Okay, if it's cyclic, then angle C over here and angle A over here added together will be 180. And if we are saying angle A we have already obtained as a 65, then of course angle C will be 180 minus 65. Are you getting it, Samya?
It is 115. Okay, this option D is the correct option. Yes, perfect, Afrin. Let's do few more. क्योंकि अब हम क्लास 10 वाले सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने वाले, जहाँ पे बहुत ही ओके सिर्फ दो ही थ्योरम है और कुछ क्वेश्चंस है, बट here and there you will encounter class 9 theorem based question, or the like class 10 class 9 both will be mixed up in any of the question, and you have to understand. I'll be showing you such question just now. Question number 7 from the exercise of your NCRT class 10. Okay, question number 7. Two concentric circle are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. हमारे पास दो सर्कल है, ओके, जो कि कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब दोनों के सेंटर सेम है. ओके, द मोमेंट यू स्टार्टेड यूजिंग योर कॉम्पास, you must have drawn so many circles. Okay, so we are just drawing the same. We are taking a center O and we are drawing a circle. और हमने अपने कंपास में थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज किया और फिर से निडल हमारा कंपास ओ पे ही है, और एक हमने सर्कल बना दिया. इसे बुलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल. मतलब हमारा रेडियस तो चेंज हो गया लेकिन सेंटर सेम है. आ रहा है समझ में? यस मैम. टू कंसेंट्रिक सर्कल, हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दोनों के सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है. वन ऑफ द रेडियाई इज 5, अनदर रेडियाई इज 3. एक जो बिगर सर्कल है उसका रेडियाई 5 है और जो स्मॉलर सर्कल है उसके रेडियाई 3 है. फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल. लार्ज जो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, उस लार्ज सर्कल में एक कॉर्ड है. ध्यान से समझो. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल. इस लार्जर सर्कल में एक कॉर्ड है, इस लार्जर सर्कल में एक कॉर्ड है. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कॉर्ड, बट आई विल जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट प्रॉपर्ली. सो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. मतलब लार्जर सर्कल में एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करो जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए निकले. लार्ज वाले सर्कल में एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करके दिखाओ जो स्मॉलर सर्कल को टच करके निकले. क्या समझ में आ रहा है हमें स्टेटमेंट? यस मैम. ओके, तो हमने एक कॉर्ड ए बी यहाँ ड्रॉ कर दिया. एक ऐसा कॉर्ड हमने ड्रॉ किया लार्जर सर्कल में जो स्मॉलर सर्कल को टच करके निकल रहा है, टच करके निकल रहा है. ओके, हमें इस कॉर्ड एबी की लेंथ बतानी है. हमें कॉर्ड एबी की लेंथ बतानी है. हमने अभी अभी इस क्लास 10 में एक थ्योरम सीखा है प्रीवियस क्लास में, दैट ये जो कॉर्ड है ए बी, ये तो टैंजेंट जैसा दिख रहा है. स्मॉलर सर्कल पे अगर हम फोकस करें, स्मॉलर सर्कल की अगर सिर्फ और सिर्फ बात करें, तो ये तो टैंजेंट जैसा दिख रहा है. और अगर ये टैंजेंट जैसा दिख रहा है तो इस टैंजेंट पे हम जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाला रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा वैसा रेडियस नहीं है, ये परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट के साथ, राइट? यस मैम. ओके, तो हमने टैंजेंट वाला लॉजिक यूज कर लिया. अभी अभी हमने क्लास 10 में पढ़ा है, whenever we are having the tangent at any point of a circle, okay, is perpendicular to the radius through the point of contact. ओके, सो यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, ये हमें पता लग गया. अब अभी अभी हमने क्लास 9 में भी एक थ्योरम पढ़ा है, ओके, दैट अगर किसी सर्कल में एक रैंडम कोई भी कॉर्ड हो और उस कॉर्ड के ऊपर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, तो हमारा कॉर्ड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. हाँ या ना?
Perpendicular from the center on the chord, bisect the chord. Perpendicular from the center on the chord, bisect the chord. तो सबसे पहले हम ये बताएंगे that OM is perpendicular to AB due to this tangent theorem. Okay, that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. ओके कोई रैंडम रेडियस नहीं, जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है उस रेडियस के साथ। ओके सो परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके साथ हमारा जो टैंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है। पहले हमें ये बताना है कि ये यहाँ 90 डिग्री ही क्रिएट हो रहा है टैंजेंट वाले थ्योरम से। ओके एंड देन हमें बताना है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, तो क्लास 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है दैट परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके perpendicular from the center on the chord bisect the chord, that means AM BM will be equal। इतना हमें डिटेलिंग देना है। उसके बाद हमें A को O से ऐसे ज्वाइन करना है, और जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे हमें समझ में आएगा ये जो OA है ये जो बिगर सर्कल का रेडियस है, AO और OA इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ओके एंड ये जो OM हमें दिख रहा है दिस इज ऑफ कोर्स द रेडियस passing through the point of contact। OM is the radius of the smaller circle। और अगर हमें OA पता है OM पता है then we can find AM by using Pythagoras theorem। okay AM in triangle OAM, easily AM you will be able to find by Pythagoras theorem। find it। Ma'am, I'm getting AM as 4 centimeter. So AM is 4 centimeter and already we have declared that AM BM is equal। AM BM is equal because our chord is getting bisected, so BM will also be 4 centimeter, hence AB length of AB we wanted to find, no, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle, so AB length will be 4 plus 4, that is 8। is it clear Afreen and Samia? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so don't think that class 9 theorems are not at all important. This is just one of the situation you have seen over here, okay, which is really simple. Now when you will start solving question, there will be tricky question, and where you have to think about all the theorem which you have learned so far, everything. In class 10 I'll be showing you just 2 theorem, but in class 9 11 12 whatever be the number of theorem you have learned, just if you are having the book, go through it all the theorem. If you don't have book, open it on the website of NCRT and just go through each and every theorem, try reminding yourself all the theorem, okay, so that after finishing this chapter we'll be solving extra question and you will see how different